Sit in a comfortable posture for a little meditation. छोटी सी साधना करते हैं, सभी लोग आंखें बंद कर लीजिए, स्थिर आसन में बैठ जाइए. Make yourself completely steady and calm. Slowly make your body completely steady, still, without movement. धीरे धीरे अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर और शांत करते जाइए. जब आपको ऐसा लगे कि आपका शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया है, तब धीरे से अपने श्वास प्रश्वास के प्रति सजग बनिए. When you feel your body is completely steady and still, then bring your awareness to your breath. Watch your breath. Watch the rhythm of the breath. ये श्वास प्रश्वास की गति को देखिए, महसूस कीजिए. अब धीरे से अपने इंद्रियों के प्रति सजग बनेंगे. सबसे पहले अपने घ्राण, अपने स्मेल के प्रति सजग बनिए. नाउ बिकम अवेयर ऑफ द सेंसेस, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल become aware of the sense of smell. Become aware of the sense of taste. अपने जीभ पर आकर स्वाद इंद्रिय को पहचानिए, देखिए. Sense of vision. Watch the eyebrow center or back of your eyes in your head. With the closed eyes, watch if you can see any color or any figure. बंद आंखों से भ्रूमध्य या आंखों के पीछे देखिए. आपके शिरः क्षेत्र में किसी भी रंग को या आकृति को पहचानिए. Sense of touch. Now bring your awareness to sense of touch. Feel all the touch you can feel in your body, subtle to subtle touch. More subtler touch. Feel all the touch in your body. स्पर्श इंद्रिय के प्रति सजग बनिए और हर एक प्रकार का स्पर्श, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्पर्श के प्रति सजग बनिए.
Now listen the sounds. Listen the subtler sound. Listen more and more subtler sound. As subtle as you can feel. Move your mind from one sound to another sound. आसपास की आवाजों को बहुत ध्यान से सुनिए। अब अपने मन के प्रति सजग बनिए। नाउ लीव द सेंसेस एंड बिकम अवेयर ऑफ योर थॉट्स। व्हाट टाइप ऑफ थॉट्स आर देयर? जस्ट बिकम अवेयर ऑफ योर माइंड एंड थॉट्स। आने वाले विचारों को देखिए, एक दृष्टा की भांति देखिए और विचारों को जाने दीजिए। विचारों के साथ संलग्न मत होइए, उसके साथ जुड़िए नहीं। Watch your thoughts like you are a seer, you are an observer, you are a drashta. Let it come and watch it, let it go without any attachment. Feel any type of prana energy is there in your whole body. महसूस कीजिए किसी भी प्राण जो आप महसूस कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस शरीर पर आइए। नाउ स्लोली बैक टू योर बॉडी। वी विल चैंट 3 Om and Shanti Path. Get ready for Om chanting and Shanti Path. हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। आप तैयार हो जाइए। लंबा गहरा श्वास लीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ इन। ओ
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़िए। Rub your palms and place your palms over your eyes and hands down. आप लोग का पुनः स्वागत है. Welcome you again for today's session. Today's session is important in many ways. And as we are going to celebrate the Navratri, the 9 nights, so today, as a preparation for it, becomes so important. आज महत्वपूर्ण दिन है जब हम लोग नवरात्रि की तैयारी के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं, तो इसके महत्व और इसकी विधियों को समझने की कोशिश करेंगे. According to astrology, we divide the clusters of stars in all 360 degrees around the whole universe from the earth into 12 parts called Rashi. And whole year, when the earth moves, it crosses through these Rashis. And today means from tomorrow, the sun enters into the first Rashi. We say Mesh Rashi. And because of this, we celebrate the tomorrow as a new year in India. So tomorrow is New Year in India. चूंकि ज्योतिष के अनुसार सूर्य मेष राशि में प्रवेश करती है, मेष प्रथम राशि है, मेष राशि में प्रवेश करने के कारण इसको वर्ष का पहला दिन माना जाता है. मान्यता के हिसाब से कल से चैत्र शुरू है और चैत्र प्रतिपदा को हम लोग पहला दिन, वर्ष का पहला दिन मानते हैं. मान्यता है कि ब्रह्मा ने आज अपनी सृष्टि बनाने की शुरुआत की थी और आज के दिन पूर्ण की थी. मान्यता ये भी है कि माँ दुर्गा का स्वरूप, जो सभी देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा को अपनी शक्तियां प्रदान करके स्वरूप दिया था, वो भी चैत्र का प्रतिपदा ही था. It is believed in our mythology that Lord Brahma created this whole universe in the first day of Chaitra Navratri. And not only that, the goddess Durga, we assume whole deities give their powers, and with the powers Durga came up, and it was the day which is tomorrow, the Chaitra, first day of Chaitra. So we celebrate it. The 9th day of this Navratri, Lord Rama took birth, and we celebrate as a Ram Navami. And that's why whole India celebrates the birth of Durga and the birth of
Rama, Lord Rama, in this Navratri. In the North India, mostly we chant the story of Ram in the Ramcharitmanas or Ramayana, and in the South, we worship Lalita Devi, we worship Tripur Sundari and Mahalakshmi. In whole South, especially in Tamil, we chant Lalita Sahasranam, and the Shankaracharyas of all India, the Dasnami tradition, they chant Saundarya Lahari as in this auspicious days. जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ना केवल सृष्टि का जन्म इस दिन हुआ, माँ दुर्गा ने भी अपना स्वरूप इसी दिन लिया। भगवान राम का जन्म भी नवमी को, नवरात्र के नवमी के दिन हुआ। इन सभी कारणों से ये 9 दिन पूरे भारत में अत्यंत महत्वपूर्ण, केवल नव वर्ष ही नहीं, माँ दुर्गा का जन्म, भगवान राम का जन्म, और इसके अतिरिक्त एक और कारण है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरी नज़र से है। There is one more reason. Along with these mythological and astrological reasons, there is one more interesting reason that I want to share you. That is, there are actually the quarterly, there are 4 intervals of the year, in which 2 intervals are very important. पूरे वर्ष में 4 अवकाश हैं, इसमें से 2 महत्वपूर्ण हैं। There are 4 Navratris in 1 year. 4 Navratri. And we celebrate 2 of them. The rest 2 is called Gupta Navratri. Only yogis and those who do some mysterious sadhana or some deeper sadhana, they follow all 4 9 nights. But for the general people, there is 2 Navratris. This Navratri in April, and in October, November, we have another Navratri. We say Sharad Navratri. So this is, we say Grishma Navratri, the Navratri of the summer, and the next one which comes in October and November, we celebrate it as a Sharad Navratri. Sharad Navratri means winter Navratri. So just 2 Navratris we celebrate, the summer and the winter, but there is actually 4. Well, I will explain you later on what are those 2 also, but let me explain first these 2. When the summer changes into winter, then we do Sharad Navratri in October, and here when the summer starts, winter completely finish and summer completely starts, we celebrate as a Summer Navratri. And when these seasons change, there is a lot of change in our body, lot of subtle changes in body, not only at the physical level, but at the cellular level, at the pranic level, and at the mental level. केवल शरीर ही नहीं, कोशिका के स्तर पे, प्राण के स्तर पे, मन के स्तर पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। इस
परिवर्तन को हमारे ऋषि पहचान गए थे और हमारे ऋषि चाहते थे कि इस परिवर्तन के दौरान यदि व्रत किया जाए, यदि अनुष्ठान किया जाए, यदि पुरस्चरण किया जाए, तो शरीर ही नहीं, शरीर के साथ प्राण, मन और सभी आंतरिक बाह्य अवयव को पूरा का पूरा लाभ और उपयुक्त दिशा मिल सके। सो the rishis at that time, they decided that if in this changing moment, in this turning point where the season outside is changing, our physical body, prana, mind, everything is changing. In this turning point, if we do something, some practice of fasting, or we do some meditations, some type of chantings, some type of rituals, then we can make our body, mind, prana all very healthy and in the proper directions. और ये दोनों नवरात्र में है, ये ग्रीष्म नवरात्र के लिए भी है और ये शरद नवरात्र के लिए भी है, बल्कि बाकी दोनों के लिए भी है, चारों के लिए। लेकिन इन दोनों नवरात्र के भीतर में थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, इनके जो बॉडी चेंजेस हैं, क्योंकि ग्रीष्म के समय जो बॉडी की संरचना होती है, जो चेंजेस होते हैं, और जब हम शरद में जा रहे होते हैं और जब हम शरद को पार करके पूरी तरह से अब गर्मियों में उतर रहे हैं, तो हमारे वात, पित्त, कफ, हमारे भीतर के जो भी पंच तत्व हैं, उनके परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कुछ कुछ परिवर्तन होता है। So we have Vata, Pitta, Kapha. There are various types of changes happen in a subtler level. The five elements, the earth, air, water, fire and space, their permutation, combinations of these elements, the three doshas. According to that, we plan our anushthan or vrat or fasting. उसके अनुसार हम लोग ये व्रत अनुष्ठान परिवर्तन करते हैं. Not only that, also our chanting, the way of rituals, the way of meditation also changes with these. We not do the same thing what we do in a Chaitra Navratri, the same thing in the Sharad Navratri. No, it's different. So today I'm going to explain you what actually we do from tomorrow. अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि कल से हम लोगों को क्या क्या और कैसे कैसे करना है. सबसे पहले ये नवरात्र शुद्धि क्रिया का नवरात्र है. Remember, this Navratri is a Navratri of cleansing, purification. So, in whole India, what we do is we try to do cleansing practices. So, this is important. आपके ये 9 दिन पूरी तरह से क्लींजिंग प्रैक्टिसेस पे डिपेंड रहेंगी. क्लींजिंग प्रैक्टिसेस अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्लींजिंग प्रैक्टिसेस में क्या होगा. दूसरा, ये नवरात्र वैष्णवों का नवरात्र है. विष्णु पूजा होती है, भगवान राम की पूजा होती है, माता वैष्णवी की पूजा होती है, माँ लक्ष्मी की पूजा होती है. ये वैष्णवी साधना है. साउथ में, साउथ इंडिया में
श्री विद्या और त्रिपुर सुंदरी की पूजा अवश्य होती है, पर मूल रूप से भाव महालक्ष्मी की जाती है। और श्री विद्या, हम लोगों को सुनने में लगता है कि श्री विद्या संभवतः त्रिपुर सुंदरी, मां षोडशी या ललिता देवी, राज राजेश्वरी देवी की पूजा है। लेकिन अगर बहुत गौर से देखा जाए तो श्री विद्या का नाम ही श्री से शुरू होता है। श्री, श्री किसको कहते हैं हम लोग? लक्ष्मी को कहते हैं। श्री विद्या का नाम ही श्री से शुरू होता है। ऐसी मान्यता है कि मां लक्ष्मी सर्वप्रथम श्री विद्या सिद्ध हुई। मां लक्ष्मी ने सर्वप्रथम श्री विद्या को सिद्ध किया, इसीलिए इस विद्या को हम लोग श्री विद्या कहते हैं। इस विद्या का नाम ही श्री विद्या है, इसलिए कि मां लक्ष्मी ने इसको सबसे पहले सिद्ध किया। मैं कल से आप लोगों को श्री विद्या के विषय में बताऊंगा। कल से मैं महालक्ष्मी की पूजा करूंगा, आप लोग को करवाऊंगा, और हम लोग कामना करेंगे कि हमारे जीवन में मां लक्ष्मी का पदार्पण हो, हमारे जिंदगी से दरिद्रता दूर हो। और दरिद्रता सभी सेंसेस में, केवल मैं धन के सेंस में नहीं कह रहा। कई बार हम लोग विचारों से दरिद्र होते हैं, कई बार हम लोग भावनाओं से दरिद्र होते हैं, कई बार हम लोग अपनी आस्था में दरिद्र होते हैं, कई बार हम लोग अपने व्यवहार में दरिद्र होते हैं। हम जब महालक्ष्मी की बात करते हैं तो वो हर प्रकार की दरिद्रता को दूर करती है। लेट मी ट्रांसलेट इन इंग्लिश। As I said, the Navratri, this Navratri is a Navratri for purification, for the cleansing practice. Also, there is a specific branch of divinity in India. Just like Shiva tradition, we have Vaishnav tradition. This Navratri is devoted to Vaishnav tradition. We not only worship the incarnation of Bhagwan Vishnu, that is Lord Rama, who incarnated in ninth day, but we worship the Vaishnav powers, Vaishnav Shaktiyan, in which Mahalakshmi, the power, the Shakti of Lord Vishnu, which is the goddess of wealth, which is the goddess of money, we worship in these days. We worship the Mahalakshmi in various terms. I was talking about Sri Vidya, that is one of the South Indian tradition of worshipping in this Navratri. Few people have a query that Sri Vidya, is it the worship of Mahalakshmi? And I just answering those queries. Go through the Sri Vidya. When we worship Raj Rajeshwari, that is the main goddess of Shri Yantra, Raj Rajeshwari, the Lalita Devi. And when you go to the mystery of these goddesses, you will find you actually worship Mahalakshmi. And the Sri Vidya also named this Sri. Sri is a term for the Mahalakshmi. So somehow we are going to worship Mahalakshmi, the goddess of wealth. In these days, to remove the poverty and poorness. But when I say poverty
poverty is not only in a term of money. We are poor in many areas, in our thoughts, in our habits, in our characters, in our health. So when we worship Mahalakshmi, we worship all the dimension of Mahalakshmi. So from tomorrow, we worship Mahalakshmi with the mysterious understanding of Shri Vidya, the Shri Yantra. So remember, from tomorrow, we do two things. A ritualistic worship of goddess of wealth, first thing, and second thing is cleansing. तो कल से हम लोग दो काम कर रहे हैं. एक है हम लोगों के भीतर का पवित्रीकरण, शुद्धिकरण, और दूसरा महालक्ष्मी की पूजा, श्री विद्या को समझने की कोशिश. तो सबसे पहले क्लींजिंग, पवित्रीकरणम, शुद्धिकरणम. वैष्णवी साधना में, वैष्णवी शक्तियों की साधना के लिए शुद्धिकरण अति अनिवार्य है. शिव की पूजा तो आप कैसे भी कर लो. शिव की पूजा में भगवान शिव अशुद्धियों को भी स्वीकार कर लेते हैं. लेकिन जब आपको भगवान विष्णु या वैष्णवी शक्तियों की पूजा करना हो तो आपको परम पवित्र होना ही होगा. शुद्धिकरण आवश्यक है. आप अशुद्धियों के साथ, राक्षसी प्रवृत्तियों के साथ, दानवीय गुणों के साथ आप विष्णु की साधना नहीं कर सकते, और ना ही वैष्णव शक्तियों की. श्री विद्या दक्षिण तंत्र है. तंत्र के दो रूप हैं, वाम तंत्र और दक्षिण तंत्र. और भी रूप हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा. दक्षिण तंत्र में श्रीकुल की कोई साधना बिना पवित्रीकरणम के नहीं होती है. इसलिए पवित्रीकरण, शुद्धिकरण आवश्यक है. और वैसे भी ये नवरात्र, जब आप ग्रीष्म में, गर्मियों में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपके शरीर में इतने कचड़े जमा हो जाते हैं, इतने मल जमा हो जाते हैं, उसको आयुर्वेद कहता है अमा. और बिना इस अमा को साफ किए आपकी साधना में आपका मन नहीं लगेगा. आप साधना करोगे तो मन उचट जाएगा, क्योंकि इस समय शरीर बहुत तेजी से मल को छोड़ता है. इस समय शरीर बहुत तेजी के साथ अमा अमा को बनाता है. आप महसूस कर रहे होंगे पिछले एक महीने से आप लोगों को बहुत जल्दी एसिडिटी, गैस, अपच हो रही होगी. सबको हो रही होगी, इरेस्पेक्टिव कि आप वात प्रकृति के हैं, पित्त प्रकृति के हैं, कफ प्रकृति के हैं, सबको हो रहा होगा. इसलिए इस समय सफाई की बहुत जरूरत है. सफाई का मतलब है कि आप अपने अंदर वैष्णव प्रवृत्ति को उत्पन्न कर रहे हैं. आप अपने भीतर मां लक्ष्मी को आवाहित कर रहे हैं. मां लक्ष्मी कभी भी अपवित्रता में नहीं होती. So what I'm saying is, the cleansing is very, very important in these days, because in these days, when summer is growing very fast, your body release various type of waste, toxins, and those chemicals which need to be excreted from the body. And these excretion is very important, otherwise you will go through
various type of indigestions, various types of gastric and acidic problems in these days. So we do some practices of cleansing, as well as here I prescribe some herbs also. मैं आप लोगों को 2 हर्ब के बारे में बताता हूं जो आपको कल से शुरू करना है। एक पुरानी कहावत है, चैत्र से नीम, यानी नीम का पेड़ आप लोग देखे होंगे। I don't know the translation of neem actually in English, but Gianna is here. I try to provide you uh, the correct English of neem. So in India we have a tree called neem, and these days new leaves of neem is coming. चैत्र के दिनों में नीम में नए पत्ते आते हैं, एकदम हल्के हरे छोटे छोटे बहुत सुंदर नीम के पत्ते आते हैं। अगर आप लोग के घर के आसपास कहीं भी नीम का पेड़ है तो वो जो कोमल हरे नए पत्ते, जो एकदम नए पत्ते गुलाबी कलर के से जो हरे में परिवर्तित हो रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे पत्ते, तो वो नीम के पत्ते आप तोड़ लें। शशांक, आप चैट में नीम का इंग्लिश डाल रहे हैं। नीम का इंग्लिश आपने लिखा है इंडियन लीलैक। दिस इज द इंग्लिश ऑफ नीम, द हर्ब आई एम टॉकिंग अबाउट, द इंडियन लीलैक। So in these days, this is a big tree, and tree these days producing new leaves. So you just collect very new leaves, एकदम नए पत्ते को तोड़ना है और उसका कपड़ छन करके उसके पानी पी लो। ऐसे ही just you make it powder and drink this with water, little lukewarm water, little, not too much, just 4-5 leaves, not many, 4-5 leaves is okay. अब आप ऐसा मत करना कि पूरा पूरा भर करके ले लिया, वो बहुत कड़वा होता है, आपको पता ही है नीम का मतलब ये कड़वा, वो इट्स वेरी bitter in taste. It is not good taste, it is very bitter in taste. So take only 3-4-5 leaves and drink it with water. Those people, it is said in our Ayurvedic Shastra, in whole Chaitra, those who drink the neem leaves, chew it properly and drink water, those who do whole month these neem leaves, whole year, no any disease, no any issue of any type of indigestion or any worm or any insects in the body, no any pathogens. Neem is so good in removing the pathogens, and it is supposed to most or best antiseptic. There are so many Ayurvedic medicines come out from these leaves. If you keep these leaves in the clothes, your cloth will not rotten, never in whole in many years. If you use the oil of these leaves, no mosquito will come. If you keep this in the corners of your home, no any type of insects or or any type of paste will appear inside your home. नीम इतना आयुर्वेदिक गुणों को लिए हुए है कि ये सभी प्रकार के कृमि कीटाणुओं का खात्मा करता है, और इन दिनों ये कृमि कीटाणु आपके भीतर बहुत तेजी से विकसित होते हैं। तो नीम लीजिए और इन सब का विनाश कीजिए। तो पहला है हर्ब, मैं आपको सुझाव दूंगा कल से आप थोड़ा थोड़ा नीम,
ज़्यादा नहीं, ज़्यादा करेंगे तो गड़बड़ होगा। जिन लोगों का पित्त बहुत बढ़ा हुआ है ना, कुछ लोग होंगे जिनको हाई एसिडिटी, दोज हु आर हाइपर एसिडिटी, दोज हु हैव सुपर एसिडिटी, वो बहुत थोड़ा सा एक पत्ती पहले लेके देखेंगे। दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक हाइपर एसिडिटी, they just start with one leaf, taste it and feel it. If they feel good, then they can take the another leaf, 2 or 3 leaves. So take care if you have hyperacidity. दूसरा हर्ब मैं बताऊंगा, जिन लोगों को नीम मुश्किल लगता है, नीम आसपास पत्ते नहीं मिलेंगे, दूसरा है छोटी हरड़। बड़ी हरड़ नहीं, छोटी हरड़। छोटी हरड़ आपको पंसारी के यहां से मिल जाएगा, तो ये छोटी हरड़ आप ले आइए, 100 ग्राम ले आइए, कोई दिक्कत नहीं, 20-25 रुपए में आ जाएगा, ढेर सारे आ जाएंगे 100 ग्राम में। एक, ज्यादा नहीं, 1 या 2 बीज, हरड़ के 2 दाने आप रात को पानी में डाल दो, सुबह तक आप देखोगे कि वो पानी पूरी ब्राउन कलर की हो गई, और सुबह खाली पेट में इसको पी लेना, और सुबह फिर दोबारा पानी डाल देना उसी बीज पे, और फिर शाम एक बार और पी लेना, और उसके बाद बीज को फेंक देना। आई एम टॉकिंग अबाउट द अनदर हर्ब, अगेन इट इज called harad. In Sanskrit it is called haritika. Some people also say harre, but I don't know the English, so any of you can look at the Google and please translate it for English people who want to know what is the English of this harad. Sashank gave me a very big name. Myrobalan. Right. Myrobalan. So this myrobalan is also very good herb, and it is very common in India. Everywhere you can get this nice seed, small nice seed. If you not get the neem, use this harad. And I very precise with don't use the powders, because there are so many adulterations in the companies. Don't go to the just company and purchase harad and neem. Don't do that. Go to the nature. Prick some leaves, it is much better. Use the seed, directly seed. Don't use the powders. Don't use the other pharmacy or company's goods. तो आप सीधे इसको यूज कीजिए, प्रकृति से लीजिए, इसके बीज मिल रहे हैं, बीज इसका सीधे पानी में डाल के लीजिए, इसका पाउडर ऑर्डर मत खरीदिए, ये पाउडर में बहुत मिलावट होता है, अनाप शनाप मिलाते हैं लोग, तो उसको पाउडर में मत जाइए, आप सीधे बीज को लीजिए, बीज खाइए, पानी में डाल के उसको पीजिए, है ना। नीम की पत्ती है, सीधे तोड़िए, नीम की पत्ती पूरे भारत में हर जगह मिलती है। द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, what I'm saying, first thing is the herb, use of the herb. I said 2 types of herbs. You can use any of them. When I say 2 herbs, it doesn't mean you use both of them in big quantity. No, 3-4 leaves, either neem or herb, or harad. Harad also 1 or 2 seeds, not many. Don't use many, because it is not only bitter in taste, but if you take excessive, then it increases your acidity also. So don't use excessive, little amount. So in little amount it will clean your body, वो आपके शरीर को साफ करेंगे। दूसरा आपको करना है कि आप लोगों को क्लींजिंग प्रैक्टिसेस फ्रॉम टुमारो
we start cleansing practices, Shat Karma. कल मैं कोशिश करूंगा आप लोग के साथ मिल करके वारिसार धौती करने का. I will start with the Varisar Dhauti from for tomorrow, the first day. So for Varisar Dhauti, you need to do several asana with me. We will do some asana with drinking 6 glass of water. Yes. So how we drink 6 glass of water? So we make the water little warm. थोड़ा सा पानी को गर्म करेंगे, कुनकुना करेंगे, lukewarm water. With the lukewarm water, we drink 2 glass of water, and then we do 5 asanas. Then again we drink 2 glass of water, then again 5 asanas, and again 2 glass of water, and again 5 asanas. So tomorrow at 6 o'clock we do a cleansing practice which is known as Varisar Dhauti. It is also popular as a name of Shankha Prakshalan. Shankha Prakshalan. It is also named as Shankha Prakshalan. So this practice is 2 types, the short one and big one. So we will do the short one, only 6. In big one, the bigger Shankha Prakshalan is very difficult, and we have to drink 20 glasses of water. So, so if you have no practice, you cannot do the bigger one, the larger one. So we do the smaller practice, only 6 glasses. So by 6 glass of water, by some asana, we clean our body. So that we do tomorrow, the Shankha Prakshalan. And we do little practices of Shri Vidya. I will explain you some mantras and puja. So we start practicing all those. Coming days, I am going to take 4 hours of classes. Means 2 hours in the morning and 2 hours in the evening. हम आने वाले 9 दिनों में 4 घंटे क्लास लेने वाले हैं. 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम. 6 से 8 सुबह, 6 से 8 शाम. Morning 6 to 8 and evening 6 to 8. And in both Sandhya, means in both time, morning and evening, we will do various practices of cleansing. Also we do some asana, pranayama, pratyahara, dharana, that is meditation. And I talk about, explain about Sri Vidya. We chant some mantras, we do some puja, the rituals, and have some satsang with it. So both the session, morning and evening, we have varieties of rituals, cleansing practices, asana, pranayama, and meditations. So I assume all of you to be with me in this practice. हम लोग साथ मिल करके साधना करेंगे. I want we do this Navratri together, especially 6 to 8 in the morning and 6 to 8 in the evening. I prefer if everyone is there with me, and especially those who are initiated with me. जो लोग नामदानी दीक्षित हैं, उनके लिए अनिवार्य है, उनको आना ही है. It is compulsory for them. So 6 to 8 in the morning and evening. And we do all type of cleansing, the rituals, the puja. We do practices. As I said, this 9 days of cleansing, it is just not mere cleansing, but we also add some divine practices, add some divinity in us. And one more thing, before I end up this session, I want you to
do certain things because we are doing the puja of Shri Vidya. All of you, please print out the Shri Yantra, the picture of Shri Yantra. If you type in Google Shri Yantra, you will get a diagram of some geometrical figure with lot of triangles. I will explain you about these triangles, this Sri Yantra. So आप लोग जो लोग के घर में ऑलरेडी श्री यंत्र स्थापित है, चाहे वो पंच धातु का हो, चाहे वो स्फटिक का हो, चाहे वो किसी भी रूप का श्री यंत्र हो, कैलेंडर हो, या आप प्रिंट आउट निकाल करके जहां पूजा करते हैं वहां श्री यंत्र को चिपका दें। और कल से हम श्री विद्या की साधना करेंगे, उसकी पूजा करेंगे, तो श्री यंत्र हम लोग के साथ होना चाहिए। सो ऑल ऑफ यू प्लीज ब्रिंग द श्री यंत्र इन योर होम in any ways. Even you can print out in a paper and place them some good place, some clean place. साफ सुथरे जगह पे उसको रख लीजिए। The second thing, every day we put a candle, एक दिया बाती, घी का दिया बाती. From next 9 days, morning and evening, we use to pray the goddess Lakshmi. So you need candles. भारत के लोग जहां घी उपलब्ध है, आप लोग घी का दिया जलाइए। घी का दिया सुबह में भी, शाम में भी। तो दिया बाती और घी खरीद लीजिएगा। पुष्प होगा तो कुछ पुष्प ले आइए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। The second thing is that you need to purchase some yogic cleansing props. जैसे मैं आप लोग को नेति सिखाऊंगा, नेति का लोटा होता है एक, there is a neti pot. Those who don't know about it, just type in a Google, Amazon, just neti pot, and you will find out a neti pot, and you purchase it today. The neti pot, N-E-T-I-P-O-T, neti pot. So there are varieties of neti pots in a market. You will get of plastics, the material plastic. Some shops you can get by steel or copper. So I don't make any discrimination this time. Whatever you get, either it is copper, it is steel, or it is plastic, you get this pot. The pot is important. The process is important. So we will do the neti, dhauti, vaman, tratak, kapalbhati. We do all cleansing practices. All 6 cleansing practices we do in these days. We do various asanas which develop a Vaishnavi Shakti inside you. So very interesting sadhana we are going to do with some asana and breathing practices also. In breathing practices, we adopt Nadi Shodhan practice. We do nice chanting for Devi, the goddess. We do some mudra. We learn about the yantra and mandala, especially the Shri Yantra. We do the Shri Vidya Sadhana. We know what is Shri Kul. We learn about Mantra Matrika or the Matrika, mystery of Matrika. So these days, we have some guest lecturers also. Maybe in couple of days you enjoy with some guest lecturers also who explain the detoxification, who will explain the Shat Karmas, the cleansing practices. So these 9 days is important. The 10th of April we finish this. So we start with the 2nd April, it will go to the 9th April.
The 8 days, 4 hours each. So these 32 hours, these 32 hours, because ninth day we don't do anything, might be 1 hour we do the finishing session, ending session. So just take 33. So total 33 hours. So from tomorrow, these 33 hours you have to spend with me. So in these 33 hours, we have to do rigorous practice of cleansing. We have to do rigorous practice to develop the divinity inside us, the purity inside us. And I hope if we work out these 33 hours very strongly, and this auspicious astrological event where the movement of sun and earth and the clusters of stars with the moon, in such a situation, in such a turning point, it leads a lot of transformation, a sublimation. Sublimation happens easily when you have astrological supports from planets, the sun and moon. And this auspicious situation is going to happen in next 9 days. And that's why we practice 33 hours of rigorous practice and feel the changes inside us. I hope you all are ready with me. वीरेशानंद जी, आप तैयार हैं? Are you ready with us? जी गुरु जी, बिल्कुल तैयार, रेडी. Naina ji, are you ready to work with us? Naina ji. Okay, she is ready. Diana, is this okay to you? Okay, good. And Kalpana ji, is it good for you? सिद्धार्थ जी, इज इट ओके? आपको 33 घंटा हमारे साथ रहना होगा. बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. किरण जी, आर यू देयर? तो 33 घंटे ये प्रैक्टिस करना है. अगर नमिता जी सुन पा रही हैं, नमिता जी आप रहेंगे हमारे साथ? बिल्कुल जी, बिल्कुल गुरु जी. गुड. सो फ्रॉम अमेरिका टू ऑस्ट्रेलिया, नैना जी फ्रॉम अमेरिका और नमिता जी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक लोग हमारे साथ हैं. उत्कर्ष जी, इज इट ओके टू यू? उत्कर्ष जी, शशांक बाबू, आप हैं पूरी तरह से 33 घंटे? यस सर, ऑल सेट. ओके. और तो किसी का चेहरा नहीं दिख रहा है मुझे. बाकी लोग वीडियोस ऑन कर सकते हैं. अभिषेक जी, कैसे हैं आप? म्यूट पर है आप अभी. आपकी आवाज तो नहीं आ रही है. अभी आ रही है? हाँ, अभी आ रही है. We are blessed to have something like this with you. ओके, ग्रेट. इस बार आप भी आइए और अपनी श्रीमती को भी बोलिए कि साथ में साधना करें. बट प्रेगनेंसी में कर सकते हैं? थोड़ा थोड़ा तो कर सकते हैं. मैं बताऊंगा कि जो प्रेग्नेंट है उनके लिए क्या करना है. श्री विद्या की साधना तो प्रेग्नेंट लेडी को करना चाहिए. ये मंत्र बड़े अच्छे होते हैं. ओके. ठीक है, वो मैं बताऊंगा कि क्या करना चाहिए. ठीक है, तो उनको कम से कम बैठाइए पूजा में, उनसे दिए जलाइए. अच्छी बात है ना. पूजा भक्ति मंत्र तो करना ही चाहिए. उसका बच्चों पे संस्कार पड़ता है. पेट में जो बच्चा होता है उस पे संस्कार जाता है. ठीक है, वो करना चाहिए. महेश्वर जी,
तो 33 घंटे साधना आप हमारे साथ हैं। प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। चलिए, तो फिर अच्छा है हम लोग का ये ग्रुप, जितने लोग भी हम लोग उपस्थित हैं, कम से कम अगर हम लोग जमकर ये 33 घंटे की साधना करते हैं। और मजे की बात की है यहाँ पे मेरे अलावे 33 लोग ही और हैं। तो 33 लोग, आप लोग 33 लोग हैं, 33 साधनाएं करनी है। आई थिंक इट्स अ गुड नंबर। अच्छा, अभी 36 हो गए, चलो। तो जो लोग मैक्सिमम दौड़ सके, साधना कर सके, मिलके हम लोग सुबह शाम साधना करते हैं। लास्ट बात एक और कहनी थी। सूर्यास्त से सूर्योदय तक, यानी शाम के बाद, कोशिश करें कि अन्न न खाएं। ठीक है। सूर्य के डूबने के बाद अन्न का सेवन ना करें सूर्योदय तक। आप पानी पी लो, कोई बात नहीं है। बहुत भूख लगी है, दूध पी लो। तो आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू ईट एनी grains after sunset and before the sunrise. Between 6 to 6, 6 from the evening and morning 6, don't eat any grains. You can take milk, you can take herbal tea, you can take vegetable soup, any liquid form, no problem. But don't eat any solid chapati, bread, chawal, or anything like that. In night, in Navratris, in every Navratra, the nights are very important. From tomorrow, I'll explain you why Navratri is 9 nights. Why don't it is 9 days? In 9 nights, 9 nights, don't eat the solid food, the grains. You can take vegetable juice or water or milk or fruit juice. It's okay. And even in a daytime, don't eat too much. So eat less. In 9 days, in these 9 Navratri session, don't eat too much. Tomorrow we are going to make khichdi. I will tell you. After the Varisar Dhoti, we eat khichdi. What is khichdi? It is a rice soup. So, in this cleansing practice of Shankh Prakshalana, the Varisar Dhoti, it is compulsory to eat rice soup with ghee. So, those who don't have ghee, then we make the rice soup with more soup. The starch is more. So, I will explain you tomorrow how to make the rice soup. But those who know, in India it is very common. Khichdi is very common. Everybody knows. भारत में खिचड़ी सबको पता है। खूब पानी वाली मूंग की खिचड़ी बनाइए, ठीक है। मूंग को गला के खिचड़ी बनाइए, ठीक है। और कल हम लोग को खिचड़ी खाना है, ठीक है। कल वारिसार धोती के बाद हम लोग खिचड़ी में घी डालेंगे और खिचड़ी खाएंगे। खिचड़ी ऐसा हो जैसे पी रहे हो, इतना पतला हो, ठीक है। तो कल साधना करेंगे, कल से हम लोग साधना करेंगे। और रात में मत खाइए, रात में छोड़ दीजिए, रात में दूध पी सकते हैं, ठीक है। तो कल से ये साधना शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको एंजॉय करेंगे, इस साधना को पूरी तरह से, और एक बड़ा चेंजेस अपने भीतर आप ला पाएंगे, ला सकेंगे। और ये चेंजेस इसी नक्षत्रों में संभव है। और आज शुरुआत के साथ आज मैं अपनी बात पूर्ण करता हूं। थैंक यू एवरीबॉडी। प्रणाम। प्रणाम, थैंक यू। हरिओम गुरु जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव।
गुरुदेव, धन्यवाद।